जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा 15th लेक्चर है रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की थी, लिम्फेटिक सिस्टम की बात की थी, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की थी। अब हम रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करेंगे, रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स गैसियस एक्सचेंज थ्रू इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन सांस अंदर लेके जाना, एक्सहेलेशन सांस बाहर लेके आना। तो इनहेलेशन दो प्रोसीजर्स है, दो मेन गैसेस एक्सचेंज है। द ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम हैज द फॉलोइंग मेन स्ट्रक्चर। रिस्पिरेटरी सिस्टम में मेन स्ट्रक्चर्स कौन कौन से इन्वॉल्व है? हमारा नोज है, माउथ है, फेयरनेस है, लेयरनेस है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है एंड लंग्स है। हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम की हम डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो the human respiratory system is a network of organs and tissues that helps us breathe, जो हमें सांस लेने में हेल्प आउट करते हैं। The primary function of this system is to introduce oxygen into the body and expel carbon dioxide from the body. प्राइमरी फंक्शन जो रिस्पिरेटरी सिस्टम का होता है, ऑक्सीजन बॉडी में लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से एक्सपेल करना। व्हाट इज द रिस्पिरेटरी सिस्टम? The human respiratory system consists of a group of organs and tissues that help us to breathe, जो हमें हेल्प आउट करें सांस लेने में। aside from the lungs there are also muscles and a vast network of blood vessels। सिर्फ lungs ही नहीं, muscles और and a vast network of blood vessels that facilitate the process of respiration। human respiratory system diagram की अगर हम बात करें, to gain a clearer understanding, we have illustrated the human respiratory system and its different parts involved in the process। तो इसमें हम अब बात करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेंट टू हार्ट और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेंट टू हार्ट। ये डायग्राम आप असाइनमेंट में बनाएंगे। ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम डायग्राम शो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ऑफकोर्स फीचर्स ऑफ द ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम हम अगर बात करें, फीचर्स खसूसियात कौन कौन सी रिस्पिरेटरी सिस्टम की। The respiratory system in humans has the following important features. The energy is generated by the breakdown of glucose molecules। energy जो generate होती है, जो breakdown होते हैं glucose molecules are living cells of the human body। Oxygen is inhaled and is transported to various parts and are used in the process of burning food particles। breaking down glucose molecules, oxygen की बहुत need होती है फूड पार्टिकल्स को ब्रेक आउट करने में एट द सेलुलर लेवल इन द सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस के दौरान। The obtained glucose molecules are used for discharging energy in the form of ATP, adenosine triphosphate। ATP पूरा फॉर्म है। Respiratory system parts and functions की अगर हम बात system, posterior nostrils, this is the structure that the hair follicles हमारे नोज में है, act as the body first line of defense के तौर पर काम कर रहे हैं। जो बॉडी में फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे हैं उनको जो है वो फॉर इनहेल लेयर। उसके बाद लेयरनेक्स की अगर मैं बात करूं तो कार्टिलेजिनियस cords lay the framework for the larynx। It is found in front of the neck and is responsible for vocals as well as aiding respiration। Hence it is also informally called the voice box का नाम दिया गया। When food is swallowed, a flap called the epiglottis folds over the top of the windpipe and prevents food from entering into the larynx। अब नोज की हमने बात की, larynx की बात की, अब हम pharynx की बात करते हैं मजीद। The nasal chambers open up into a wide hollow space called the pharynx। It is a common passage for air as well as food, दोनों के लिए जरूरी है। It functions by preventing the entry of food particles into the windpipe। The epiglottis is an elastic cartilage which serves as a switch between the larynx and the esophagus by allowing the passage of air into the lungs and food in the gastrointestinal tract। Have you ever wondered why we cough when we eat or swallow? इसका आंसर बहुत जरूरी है। Taking while we eat or swallow many sometimes result in instant coughing। The reason behind this reaction is the epiglottis, main reason। It is forced to open for the air to exist outwards and the food to enter into the windpipe, triggering a cough। ट्रैकिया को हम डिस्कस करते हैं।
The trachea or the windpipe rises below the larynx and moves down to the neck. The walls of the trachea complete C-shaped cartilaginous rings होते हैं basically, which gives hardness to the trachea and maintain it by completely expanding. The trachea extends further down into the breastbone and splits into two bronchi, one for each hand, left, right. ठीक है. उसके बाद हम मजीद आगे बात करते हैं ब्रोंकाई की. Basically, the trachea splits into two tubes called the bronchi, which enter each lung. The bronchi divide into secondary and tertiary bronchioles, and it further branches out into small air sacs called the alveoli. The alveoli are single-celled sacs of air with thin walls. It facilitates the exchange of oxygen and carbon dioxide molecules into or away from the bloodstream. Lungs are the primary organs of respiration. Lungs एक major organ है and other vertebrates. They are located on either side of the heart in the thoracic cavity of the chest. Anatomically, the lungs are spongy organs with an estimated total surface area between 50 to 70% square meters. अच्छा खासा एरिया जो घेरा हुआ है. The primary function of the lungs is to facilitate the exchange of gases between the blood and the air. Gases का exchange है हमारे blood और air के दरमियान. Interestingly, the right lung is quite bigger and heavier than the left lung. Right lung जो है वो bigger है left lung की निस्बत. Respiratory tract की हम अगर बात करें, the respiratory tract in humans is made up of the following parts. External nostrils क्या है for the intake of air. Of course, nasal chamber which is lined with hair and mucus to filter the air from dust and dirt. Basically, pharynx, it is a passage behind the nasal chamber and serve as a common passageway for both air and food. Larynx, known as the sound box, at its houses vocal cords which are paramount in the generation of sound. Epiglottis, it is a flap-like structure that covers the glottis and prevents the entry of food into the windpipe. Trachea, it is a long tube passing through the mid-thoracic cavity. Bronchi, the trachea divides into left and right bronchi. Bronchioles, each bronchus is further divided into finer channels. Bronchioles को further divide किया गया, उनको bronchioles का नाम दिया गया. फिर alveoli, the bronchioles terminates in balloon-like structure, जो होगा known as alveoli. Lungs, humans have a pair of lungs which are sacs-like structures and covered by a double-layered membrane known as pleura. Air is inhaled with the help of nostrils and in the nasal cavity. The air is cleansed by the fine hair follicles present within them. The cavity also has a group of blood vessels that warm the air. This air then passes to the pharynx. Pharynx में जाएगी, larynx में जाएगी, तो फिर trachea में enter होगी. 3 major steps. The trachea and the bronchi are coated with silicated epithelial cells and globulate cells. Secretory cells उनको बोला जाता है, which discharge mucus to moisten the air as it passes through the respiratory tract. It also traps the fine bites of dust or pathogen that escape the air in the nasal opening. The motile silica beat in an ascending motion such that the mucus and other foreign particles are carried back to the buccal cavity where it may either be cupped out or swallowed. Once the air reaches the bronchus, it moves into the bronchioles. Bronchioles convert होंगे alveoli में and then into the alveoli. ये आप टेबल फॉर्म में करेंगे, पैराग्राफ फॉर्म में करेंगे तो आपके लिए मुश्किल होगा. टेबल फॉर्म में लिखिए, इसको गो थ्रू कीजिएगा माइंड में. रिस्पायरेटरी सिस्टम की फंक्शंस की अगर हम बात करें, द फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम आर एज फॉलोज. इनहेलेशन और एक्सहेलेशन सबसे मेजर फंक्शन है. द रिस्पायरेटरी सिस्टम हेल्प्स इन ब्रीथिंग, आल्सो नोन एज पल्मोनरी वेंटिलेशन का नाम दिया गया है. The air inhaled through the nose moves through the pharynx, larynx, trachea and into the lungs. सबसे पहले pharynx में, सबसे पहले nose, pharynx, larynx, trachea and into the lungs. The air is inhaled back through the same pathway use किया जा रहा है. Changes in the volume and pressure in the lungs adds in pulmonary ventilation. Exchange of gases between lungs and bloodstream. दूसरा function important respiratory system का. Inside the lungs, the oxygen and carbon dioxide enter and exist respectively through millions of microscopic sacs called alveoli. The inhaled oxygen diffuses into the pulmonary capillaries, binds to hemoglobin, and is pumped through the bloodstream. The carbon dioxide from the blood diffuses into the alveoli and is expelled through exhalation के through expel हो जाएगा. तीसरा major function exchange of gases between bloodstream and body tissues. The blood carries the oxygen from the lungs around the body and releases the oxygen
When it reaches the capillaries, the oxygen is diffused through the capillary walls into the body tissues. The carbon dioxide also diffuses into the blood and is carried back to the lungs for release. The vibration of the vocal cords. While speaking, the muscles in the muscles vocal cords की vibration के बारे में बात की जाए. While speaking, जब हम बोलते हैं, the muscles in the larynx move the arytenoid cartilage. These cartilage push the vocal cords together during exhalation. When the air passes through the vocal cords, it makes them vibrate and create sound. Olfaction or smelling during inhalation, when the air enters the nasal cavity, some chemicals present in the air bind to it and activate the receptors of the nervous system on the silica. The signals are sent to the olfactory bulbs via the brain tissue. Respiration is one of the metabolic processes which plays an essential role in all living organisms. However, lower organisms like the unicellular do not breathe like humans. Instead, they utilize the process of diffusion. ANNELIDS, like earthworms, they have a moist curtil which helps them in gaseous exchange. Respiration in fish occurs through special organs के through. उनको गिल्स का नाम दिया गया. Most of the higher organism possesses a pair of lungs for breathing, जैसा कि हम लोग. ठीक है. तो ये हमारा जो था रेस्पिरेटरी सिस्टम था. अब हम इंशाल्लाह हम आगे स्किन की बात करेंगे कि स्किन बेसिकली मेजर ऑर्गन है, तो क्या क्या एक्सटर्नल मेजर ऑर्गन है, तो क्या 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 फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है. तो रिस्पिरेटरी सिस्टम में आपने जो असाइनमेंट करनी है, रिस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शंस को जो है आपने ब्रीफली लिखना है, राइट डाउन करना है. ठीक है. तो इंशाल्लाह फिर हम लोग जो है वो स्किन की बात करेंगे. मेजर ऑर्गन है हमारा एक्सटर्नल. 16th लेक्चर इंशाल्लाह हमारा होगा. तो आप तब तक बहुत ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.